Assalamu alaikum and good morning to everyone. This is Engineer Aftab Shah with you, and today we are going to study about Diglossia. Diglossia is a term of social linguistics. आज हम बेटा डिग्लोशिया को स्टडी करेंगे और ये सोशल लिंग्विस्टिक्स की एक टर्म है और हम डिग्लोशिया के बारे में मुख्तलिफ चीज़ों को देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वील स्टडी द डेफिनेशन ऑफ डिग्लोशिया और द मीनिंग ऑफ डिग्लोशिया. And after that, we will go to the explanation of the same. And after that, I sent you the total outlines. We'll study about the history of Diglossia. And then we have the features of Diglossia. Then we will study about the varieties of Diglossia. How many different varieties are there? And then we'll study about the characteristics and various terms related to Diglossia. We'll also study about distribution of Diglossia, how it is distributed among various communities. And we'll study about the functions, and after that we'll study about the examples. And in example, we'll study about Punjabi, Urdu, and English language. So first of all, please open your slides, the presentation which I sent you on your mobile phone. Open the very first slides, and you people who are watching us on YouTube, you can see the slide on your screen. In the very first slide, we see that what is Diglossia. Diglossia क्या होता है? पहले मैं आपको उर्दू में बता देता हूँ, उसके बाद इसको इंग्लिश में देखते हैं. डिग्लोशिया से मुराद होता है एक ही मुआशरे के अंदर एक ज़बान की दो या दो से ज़्यादा वैरायटीज़ का बोला जाना. वी कॉल इट सोशल एक्ट एज वेल. इसको सोशल एक्ट भी कहते हैं, बट ये उसके लिए प्रॉपर टर्म है, दैट इज़ कॉल्ड डिग्लोशिया. फॉर एग्जाम्पल, हमारे ही मुआशरे के अंदर अगर उर्दू की दो मुख्तलिफ जो है वो वर्जन इस्तेमाल हो रहे, एक वो जिसको हम कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, द लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड इन ऑफिसेस, इन क्लासरूम्स, इन फॉर्मल सेटिंग्स, और दूसरी वो ज़बान है उर्दू जो गली मोहल्लों में फैमिलीज में इस्तेमाल होती है. क्लियर? तो ये जो दोनों वैरायटीज़ ऑफ उर्दू लैंग्वेज बीइंग स्पोकन इन अ कम्युनिटी, दे आर कॉल्ड डिग्लोशिया. ये वो सिचुएशन है, इनको सोशल एक्ट्स कहते हैं या वैरायटीज़ ऑफ लैंग्वेज कहते हैं, और ये जो सिचुएशन है दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड डिग्लोशिया. इज क्लियर? कैसी सूरत हाल बेटा जिसमें एक ज़बान की दो या दो से ज़्यादा वैरायटीज़ एक इलाके में इस्तेमाल हो रही है. उर्दू ज़बान की भी हो सकती है, इंग्लिश की भी हो सकती है, पंजाबी की भी हो सकती है. आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. एम आई राइट? ओके, हियर वी गो. व्हाट इज डिग्लोशिया? Diglossia is a situation in which two dialects or languages are used by a single language community. Diglossia बेटा एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें दो dialects means the geographical variations which exist in a language. एक इलाके से दूसरे इलाके में जो ज़बान के अंदर फ़र्क पड़ता है, they are called dialects or languages. या हम उनको दो अलग-अलग languages कह सकते हैं, but actually they are one language only. वो दो अलग ज़बानें नहीं बल्कि एक ही लैंग्वेज की दो शक्लें हैं. are used by a single language community, जिसको एक ही इलाके में बोले जाने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं. Is clear to everybody? Here we go to the second slide. That is about the history of Diglossia बेटा. History of Diglossia कहाँ से आती है? हम जब इसको स्टडी करते हैं, विल नॉट गो इनटू द इन डेप्थ स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ डिग्लोशिया, लेकिन एक सादा सा कॉन्सेप्ट ये कि जब ज़बान बनी और उसका इस्तेमाल है तो साथ ही डिग्लोशिया की जो शेप है वो बनती गई. ये सिचुएशन जो है वो साथ साथ बनती गई कि लोगों ने जब इसको इस्तेमाल करना एक्चुअली शुरू किया तो जो है वो उसकी जो सिचुएशन बनी कि कुछ लोगों ने ज़बान को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, कुछ लोगों ने ज़बान को नॉर्मल अंदाज से इस्तेमाल किया. द वर्ड डिग्लोशिया डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डिग्लोसिस मीनिंग बाइलिंगुअल. ये डिग्लोसिस से बेटा ड्राइव है जिसका मतलब है बाइलिंगुअल, दो ज़ुबानें बोलने वाला. बेस्ड ऑन द पैटर्न्स ऑफ फ्रेंच डिग्लोसी, और इसको फिर ये वर्ड की जो फॉर्मेशन हुई है फ्रांसीसी ज़ुबान के तरस के ऊपर डिग्लोशी के नाम से, डिग्लोसी के नाम से. Here we go to the second slide. The term Diglossia was first introduced in English by Charles A. Ferguson. Charles A. Ferguson ने बेटा 1959 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया. He is credited to be the first linguist who used the specific term. उसको इस बात का जो है वो यानी ये उसके पास एक क्रेडिट इसका, या उसको सराहा जाता है कि वो पहला लिंग्विस्ट है जिसने ज़बान को यूज़ किया. In his article 1959,
1959 में अपने आर्टिकल में उसने इसको इस्तेमाल किया। डिग्लोशिया इन द जर्नल वर्ल्ड, डिग्लोशिया का जो वर्ड है उसने इस्तेमाल किया अपनी जर्नल के अंदर जिसका नाम था वर्ड। इज क्लियर? इफ वी गो टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अबाउट डेफिनेशन बेटा ऑफ डिग्लोशिया। दिस इज अबाउट डेफिनेशन। वी विल हैव वेरियस डेफिनेशंस, आपने सारी नहीं करनी, इट्स ऑल अप टू यू। यू कैन learn 2 definitions or 3, but whichever definition you are learning, actually you need to learn these definitions with respect to a particular point of view, यानी respect to a reference। एक reference से आपने उन definitions को याद करना। It's clear to everybody? Okay, and now we go to the definition of diglossia according to Charles A. Ferguson। चार्ल्स ए फर्गूसन के मुताबिक बेटा, The term diglossia refers to a situation, एक ऐसी सूरत-ए-हाल को रेफर करती है where two varieties of language exist side by side, या ज़बान की दो varieties जो हैं वो side by side exist कर रही होती हैं throughout the community, पूरे मुआशरे के अंदर, with each having a definite role to play, और दोनों का एक बड़ा ही नपा-तुला किरदार होता है मुआशरे के अंदर। इस क्लियर? क्योंकि बेटा जहाँ हम एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज फैमिली में नहीं यूज कर सकते, तो वरना फैमिली और ऑफिस में फर्क क्या रहेगा? लाइक आई एम टीचिंग यू ऑल पीपल, आई एम यूजिंग वेरी स्टैंडर्ड लैंग्वेज, द वर्जन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और उर्दू लैंग्वेज, बट व्हेन आई एम विद माय फैमिली मेंबर्स आई कैन नॉट हैव द सेम बिहेवियर विद माय चिल्ड्रन। उनके साथ मैं स्टूडेंट वाला जो है बिहेवियर है नहीं कर सकता। आई हैव टू चेंज माई वे ऑफ डीलिंग विद देम, और उनके साथ गुफ्तगू करने का तरीका कार हो रहा है, अल्फाज का इस्तेमाल हो रहा है, फेशियल एक्सप्रेशन हो रहा है, सारी चीज़ें बदल जाती हैं। इट्स क्लियर? So according to Charles A. Ferguson, that the two varieties of a language, when they are used in a single community, the situation is called diglossia. Here we go. Next one. Again, we have another definition of diglossia. This definition, according to Ferguson, diglossia is a relatively stable language situation. ये उसकी बेटा डिटेल है। फर्गूसन के मुताबिक डिग्लोशिया जो है वो ज़बान की एक relatively यानी दूसरी जो वैरायटीज हैं उसके मुकाबले में ये जो वैरायटीज है ये स्टेबल है, इसमें एक ठहराव है, मुकाबलतन जो है ना ये परमानेंट होती है, इसमें ठहराव होता है। इन विच जिसमें इन एडिशन टू द प्राइमरी डायलेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज, जो उसका बुनियादी एक वैरायटी है, शक्ल है ज़बान की, उसके यानी उससे मज़ीद क्या होता है, देयर इज़ अ वेरी डाइवर्जेंट हाईली कोडिफाइड सुपरपोज्ड वैरायटी, कि इससे बढ़ के भी एक बहुत इससे मुख्तलिफ वर्ड्स के लिहाज से, हर लिहाज से एक सुपर कोडेड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज भी होती है, जो कि मुआशरे में साइड बाय साइड इस्तेमाल की जा रही होती है। The vehicle of the large and respected body of written literature, either of an earlier period or in another speech community, which is learned largely by formal education and used for most written and formal spoken purposes, but it is not used by any sector of the community for ordinary conversation. कहते हैं कि दो किस्म की जो ज़बानें इस्तेमाल हो रही होती है, उसमें एक को हम कहते हैं फॉर्मल या हाई लेवल ऑफ लैंग्वेज, ये नेक्स्ट हम बेटा आप देखेंगे स्लाइड्स के अंदर, हाई लेवल ऑफ लैंग्वेज, एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड लो लेवल ऑफ लैंग्वेज। ये हाई लेवल ऑफ लैंग्वेज के बारे में लिखा है कि वो ज़बान की किस्म है जो बड़े लोगों ने इस्तेमाल की, ऑथर्स ने, राइटर्स ने, and it's used in various sort of departments and in various sorts of writings. But the other type of language, that is our lower language, that is called L actually, lower level of language. This is used mostly by the families or by the informal setting, like in parties or in streets and on roads, in shoppings, etc. It's clear to everybody? If we go to the next one, and it's actually a bit longer explanation, is up to you. You can learn 3, 4, 5 lines, depending upon the type of the question that is asked from you. If we go to the definition of diglossia according to Longman Dictionary of Applied Linguistics, according to that dictionary, it's mentioned when two languages or language varieties exist side by side in a community. कहता है जब दो ज़बानें या एक ही ज़बान की दो वैरायटीज एक कम्युनिटी में साइड बाय साइड एग्जिस्ट करती हैं, एंड ईच वन इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस, और हर एक को मुख्तलिफ मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दिस इज कॉल्ड डिग्लोशिया। इसको डिग्लोशिया कहते हैं। इस सिचुएशन को, ज़बानों को नहीं, बट दिस सिचुएशन इज एक्चुअली कॉल्ड डिग्लोशिया। इसके लिए टू एवरीबॉडी, here we go. According to Wardorf, diglossia refers to the societies with two distinctive codes of speech which are employed in different situations.
Diglossia से मुराद वो मुआशरे हैं, refers to the societies, उधर था situation, here it's society. उन मुआशरों को रेफर करती है जहाँ ज़बान की दो मुख्तलिफ वराइटीज साइड बाई साइड इस्तेमाल हो रही होती है. Is clear बेटा to everybody? Here we go to the next one. Definition of diglossia. Diglossia is the characteristic of a speech community group of people with common rules of speaking rather than individuality. Is clear? Diglossia से मुराद बेटा एक ही कम्युनिटी के अंदर दो या दो से ज्यादा वराइटीज का होना और बहुत ज्यादा लोगों का उस वराइटी को बोलते हुए होना. नॉट दैट अ पर्टिकुलर पर्सन के एक ही शख्स जो है वो उसको बोल रहा है, नॉट इंडिविजुअलिटी बट कॉमनैलिटी. क्लियर? अब इसमें से जो मर्जी हॉलमस की डेफिनेशन बेटा जो मर्जी आप कर सकते हैं इसमें. जोशुआ फिशरमैन क्या कहता है? गेव अ मॉडिफिकेशन ऑफ फर्गुसन's 1959 ओरिजिनल कॉन्सेप्ट एंड रादर स्ट्रिक्ट डेफिनेशन ऑफ डिग्लोशिया इन 1967. 1967 के अंदर उसने एक अलग डेफिनेशन दी. वो कौन सी है बेटा? व्हाट इज दैट? हियर वी गो. Fisherman presented an expansion of the Ferguson definition of diglossia in two respects. उसने इसको मजीद expand किया है. Number one कौन सा है? Our diglossic speech community is not characterized by the use of two languages variety only. There may be more than two varieties. कहता है ऐसा नहीं है कि दो ही varieties है, दो से ज़्यादा बेटा हो सकते हैं. Because if you even look at your own society, if you talk about Punjabi or Urdu, you will have so many different varieties being spoken by so many different community groups. Maybe sometime the 50% of the population, they are speaking one type of variety, and then 25% another type, and another 25% they are speaking third type of variety. And sometimes it can also happen 30%, 30%, 30%, and 10%. So this can happen in various societies. So it's not, according to Ferguson, that there are two varieties of a language. There can be more than two varieties. It's clear to everybody? And the second major extension that he makes to the language, the definition given by Ferguson, Fisherman says, diglossia refers to all kinds of language varieties which show functional distribution in a speech community. Diglossia doesn't mean 2 or 3 or 4, it refers to the whole type of language variety. यानी ये बेटा 1, 2, 4 नहीं है, बल्कि जितनी मुख्तलिफ अक़साम की लैंग्वेज वराइटीज होती है सबको ये रेफर करता है. Diglossia as a consequence describes a number of socio-linguistic situations. लिहाजा इसके नतीजे के तौर पर डिग्लोशिया जो है वो बहुत ज़्यादा जो मुआशरती ज़बान की सूरत हाल है, सिचुएशन है, उनको रेफर कर रहा होता है. वन लैंग्वेज आर द यूज ऑफ सेपरेट डायलैक्ट्स Ferguson standard with the dialects distinction to use the related or unrelated separate languages. लिहाजा डिग्लोशिया से मुराद है कि या तो एक ज़बान के मुख्तलिफ डायलैक्ट या एक से ज़्यादा दो ज़ुबानें जिनके दरमियान में एक कॉमनैलिटी पाई जाए, वो यानी हम उसको दोनों तरह से बेटा कैसे, या तो एक ही ज़ुबान क्या कि उसकी दो वराइटीज़ बना दे, या हम कहेंगे ये दोनों अलग-अलग ज़बानें और इसके दरमियान में कॉमनैलिटी पाई जा रही है. इसके लिए तो इट्स ऑल अप टू अस, यानी वो कान को एक तरफ से पकड़ लें या कान को दूसरी तरफ से पकड़ लें, बात वही है. क्लियर टू एवरीबॉडी? हियर वी गो टू द नेक्स्ट वन. फीचर्स ऑफ डिग्लोशिया बेटा, इसके फीचर्स क्या होते हैं? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फीचर्स ऑफ डिग्लोशिया बेटा. डिग्लोशिया के फीचर्स को हम स्टडी करते हैं, इसमें कौन कौन सी खसूसियात हैं. Diglossia has been used both in narrow and in much broader sense. In the narrow and original sense of the term, it has three crucial features. इसको narrow sense में भी इस्तेमाल किया है और broader में भी, यानी बड़ी बड़ी communities के अंदर भी और short small communities के अंदर भी. In the original or narrow sense, two distinct varieties of the same language are used in the community, with one regarded as the high or H variety and the other is regarded as L or low variety. इसलिए ये बेटा इसका पहला फीचर है, और we can also call it detail of diglossia. Each variety is used for quite distinct functions. H and L components each other. कहते हैं दोनों varieties को मुख्तलिफ functions के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ को फॉर्मल रस्मी कामों के लिए और दूसरे को गैर रस्मी कामों के लिए. H and L complement each other, दोनों एक दूसरे को मुकम्मल करके जुबान को करती हैं. They are not against each other, they are complement, वो complete करती हैं बेटा एक दूसरे को. No one uses the H variety in everyday conversation. रोजमर्रा की conversation में कोई भी high variety को यूजर नहीं करता. Varieties of diglossia. Diglossia, here we go actually about the varieties. Diglossia has two types of varieties, the high variety and low variety. High variety is called H and the low variety is called L. Here we go. It's mentioned here in the figure very
comprehensively. Variation of diglossia. Diglossia has got two varieties, low variety, high variety. And low variety is used in, high variety is used in very formal settings. Number one, officials and professionals. Low variety is used in informal settings. For example, friendly slang and vulgar language. That is normally used in our, the friendly language is used in our families with the friends, and slang and vulgar languages, the type of languages, they are normally used in streets, and especially the uneducated or a sort of roguish people. Here we go. High variety. A more standard variety is called the high variety of language, Longman Dictionary of Applied Linguistics, and this is referred to as H. Clear? What we are studying actually, the type of language in our classes, in our literature, that is the high variety of English language. And how, if you watch some sort of movie or where the people are uneducated, they talk with each other using the low variety of language. Is clear? Here we go to the high variety definition and explanation. High variety is regarded as the standard variety, and people use it as formal or official situation, such as government conference, event, formal letters, broadcasters, religious services, and teaching, etc. इन सारी मुख्तलिफ जगहों पे जो ज़बान इस्तेमाल होती है बेटा, वो हाई वैरायटी होती है, जिसमें हमारे पास फॉर्मल सेटिंग्स होती है, इनफॉर्मल नहीं होती, रस्मी सूरत हाल के अंदर. High variety is used for literary and literacy purposes and for formal, public and official uses. ये तदरीसी मकासद के लिए इस्तेमाल होती है और इसके अलावा ये ऑफिस में इस्तेमाल होती है. A more standard variety called the high variety or H variety. ये एक ज़्यादा स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म है. अंग्रेज़ी की जो बेटा ज़ुबान पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती है और सिखाई जाती है, दैट इज़ द हाई वैरायटी. और जो अंग्रेज़ी की ज़ुबान लोग खुद सीखते हैं अंग्रेज़ी कंट्रीज़ में जाके, दैट इज़ एक्चुअली द लो वैरायटी. Is clear to everybody? Here we go to the next one. Low variety. A non-prestige variety is called the low variety. ऐसी ज़ुबान जिसकी बहुत ज़्यादा कदर कीमत नहीं है, जो आम इस्तेमाल होती है, that is called actually low variety. Longman Dictionary of Applied Linguistics. ये रेफरेंसेस बेटा आपने अपने आंसर में साथ लिखने हैं ताकि पता चले आपने वहाँ से इसको याद किया. Is clear? Here we go to the low variety. Low variety is regarded as the non-standard variety, and people use it as informal situations such as family members, neighbors, local markets, and talking between friends and close friends. Low variety is used for informal conversation and daily use. ये सारी जो है वो गैर रस्मी सूरत हाल में बेटा इस्तेमाल होती है. इसका जो जिस्ट है, जो इसका समरी, वो यही है. इस क्लियर? फैमिलीज में, फ्रेंड्स में, गली मोहल्लों में, मार्केट के अंदर एक्सेट्रा, बट दे कैन नॉट बी यूज्ड इन क्लासरूम सेटिंग्स. हियर वी गो. एवरीवन कैन स्पीक द लो वैरायटी ऑफ लैंग्वेज. हर कोई जो है वो लो वैरायटी बेटा बोल सकता है, लेकिन हाई वैरायटी जो है वो हर कोई बोल नहीं सकता. एंड विल डू सो इन इनफॉर्मल सिचुएशन, बट नॉट एवरीवन कैन यूज द हाई वैरायटी. हर कोई जो है वो लो वैरायटी को बेटा बोल सकता है, लेकिन हाई वैरायटी को जो है वो लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते. वो बहुत कम लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा जिनको आता है, वो लोग जो है वो लो वैरायटी को इस्तेमाल करने के साथ साथ हाई वैरायटी को इस्तेमाल करेंगे. Here we go. The phenomenon is due to the distinct level of linguistic knowledge the speaker has. ये इस वजह से है क्योंकि स्पीकर को, बोलने वाले को, दोनों वैरायटीज का अच्छा खासा इल्म होना चाहिए. देखिए, जब अंग्रेजी बोली जाती है सादा अल्फाज में, विदाउट फॉलोइंग ग्रामेटिकल रूल्स, विदाउट फॉलोइंग स्ट्रक्चर, विदाउट प्रॉपर इंटोनेशन, प्रॉपर स्ट्रेस पैटर्न, विदाउट फॉलोइंग द प्रॉपर स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिसेस, तो जो वैरायटी बोली जाती है दैट इज एक्चुअली लो वैरायटी. और समझ आ जाती है, फंक्शन उससे भी बेटा हो जाता है हमारा, बट एक्चुअली दैट विल not give us an indication that we are very educated or we belong to an elite class or we are from educated strata of society, but they will consider us we are uneducated, we don't know a lot about English, etc. काम चल ही जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे पानी का ग्लास दे. हम ऐसे भी कह सकते हैं, ग्लास ऑफ वाटर गिव मी. समझने वाले को समझ आ जाएगी कि हम जो है वो पानी का ग्लास मांग रहे हैं, बट एट द एंड उसको कुछ और भी समझ आ जाएगा. इट्स क्लियर कि ये जो वैरायटी है ये ठीक नहीं है, एजुकेशन कम है, या ये जो है ना वो ही इज ट्राइंग टू impress me but with wrong English. There we go. The Diglossic community or Diglossic community, the high variety which is linguistically related to but significantly different from the vernacular of low varieties, has no native speakers. कहते हैं कि जो in Diglossia community, the high variety, which is linguistically related but not significantly different from the vernacular, are low varieties, has no native speakers. कहते हैं जो किसी भी जुबान की बेटा जो हाई वैरायटी है और वो लो वैरायटी से बिल्कुल डिफरेंट ना हो,
उसके जो बोलने वाले लोग हैं वो नेटिव स्पीकर्स कम हो गए। यानी नेटिव स्पीकर से मुराद जो कुदरती तौर पे इस बात सीखते हैं और बोलते, ऐसा नहीं होगा, वो सीखनी पड़ेगी। वो जैसे हमें अंग्रेजी सीखनी पड़ती है, बड़ी एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंग्लिश, इसी तरह जो प्रॉपर अंग्रेजी बोलते हैं इन अमेरिका और इन यूएसए और यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, जो ये वाली जुबान अगर किसी ने बोलनी तो उसको बेटा अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, वरना नेटिव स्पीकर हाई वैरायटी ऑफ लैंग्वेज नहीं बोल सकते। इस क्लियर? बिकॉज इसमें रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, प्रोनाउंसिएशन होती है, वर्ड्स होते हैं, देयर आर सो मेनी वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट। और एक आम बंदा जो अनपढ़ है, जो जुबान सीखता है गली मोहल्लों से, वो ये सारे रूल्स से जो है वो वाकफ नहीं होता। इस क्लियर? इफ वी गो टू द नेक्स्ट वन अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिग्लोशिया। इसकी बेटा खसूसियात, पहले हमने फीचर्स देखे, नो वी आर गोइंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1, Ferguson listed the following specific characteristics of Diglossia language: situation involving the function, prestige, literary heritage। ये सारी की सारी बेटा इसकी हम देखेंगे कि इन सब रिस्पेक्ट्स के, इन सब चीज़ों या टर्म्स के लिहाज से जो हाई वैरायटी है वो लोअर वैरायटी से डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, द वेरी फर्स्ट वन वी हैव हियर इज अबाउट फंक्शन। Diglossia is different from bilingualism। ये दो ज़बानें सीखने से मुख्तलिफ है। ये वो सिचुएशन, एक ही ज़बान की दो वैरायटीज होती है। Diglossia has H&L varieties that are used for different purposes। इसकी दो वैरायटीज है, एक का और मकसद होता है, एक का और मकसद होता है। H वैरायटी बेटा वो ऑफिशियल और फॉर्मल सेटिंग के अंदर इस्तेमाल होती है, उसका मकसद और है। और जो L वैरायटी है वो फैमिली, गली मोहल्लों में इस्तेमाल होती है, उसका मकसद है और है। The functions of the two varieties of a language, they are different from each other। Clear? H is a more formal variety and L is used for less politically important functions। यानी H जो है ये फॉर्मल है, रस्मी है, और L इज यूज्ड फॉर लेस पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट फंक्शन। और L जो है ये आम फंक्शंस के लिए, जो डेली कम अहम के जो अहमियत वाले काम होते हैं वह इस्तेमाल होती है। दे हैव देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स इन विच दे आर नॉर्मली यूज्ड। इनका अपना अपना एरिया है जहाँ ये नॉर्मली यूज होती है। मसला कहाँ बेटा पैदा होता है? जहाँ हम एक टाइप को दूसरी टाइप में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, उससे काम खराब हो जाता है। उससे फिर वो जो ताल्लुकात भी खराब होते हैं, सिचुएशन भी खराब होती है और मामलात भी खराब हो जाते हैं। Here we go to the next one. That is about prestige. The functions and after that prestige. बेटा इनकी कदर कीमत, मुआशरती कदर इसके। H is highly valued, prestigious variety। इसकी बड़ी ज़्यादा कदर कीमत है। जो अच्छी अंग्रेजी बोलता है, अच्छी उर्दू बोलता है, उसकी मुआशरे में कदर होती है, वो उस पढ़ा लिखा समझा जाता है। People have more positive attitude towards age। लोगों का ज़्यादा मस्बत रवैया होता है हाई वैरायटी की तरफ। लोग बात भी सुनते हैं, सारी बात उसकी करते हैं। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ ग्रेट लिटरेचर, रिलीजियस टेक्स्ट्स एटसेट्रा। ये अदब की अजीम जो, यानी अदबी जो हमारे पास शाहकार है, उनकी ज़ुबान है, ये मज़हब की ज़ुबान है। द एल वैरायटी इज़ फेल्ट टू बी लेस वर्दी। ये कम जो है वो वर्दी है, ये ठीक नहीं है। करप्ट, ब्रोकन, वल्गर, डिग्निफाइड एंड स्टिग्मेटाइज्ड वैरायटी। ये कम है, करप्ट है, ब्रोकन है, यानी आम फार्म से ज़ुबान। स्टिग्मेटाइज, इनको लोग बाज़ औक़ात हम अच्छा भी नहीं समझ होते। इसके लिए इफ वी गो टू द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट स्लाइड अबाउट लिटरेरी हेरिटेज। बेटा जितना भी हमारे पास अदबी वर्सा है वो सारा H वैरायटी के अंदर मौजूद है। L वैरायटी के अंदर अदबी वर्सा मौजूद नहीं है, एक्सेप्ट वी हैव सम सॉर्ट ऑफ ओरल ट्रेडिशंस। कुछ ओरल ट्रेडिशंस होती हैं, बस इसके अलावा जो रिटन है वो H वैरायटी के अंदर ही लिखा जाता है। इसके लिए एवरीवन, हियर वी गो टू द नेक्स्ट वन, एक्विजिशन। बेटा इनका हासिल करना, किस तरह को बंदा सीखता है। तो L वैरायटी ऑटोमेटिकली आती है, H वैरायटी के लिए स्कूल कॉलेजेस जाना पड़ता है। इसके लिए you people can read it by yourself, but I'm giving you the brief information that is hidden inside this slide। Here we go, standardization। L वैरायटी बेटा स्टैंडर्डाइज्ड है, हम रूल्स को ब्रेक नहीं करते, हम जो है वो रूल्स को बिल्कुल फॉलो करते हैं उसमें। L वैरायटी स्टैंडर्डाइज नहीं है, इट्स फ्लुएंट। इसके लिए H is strictly standardized German। These grammars and dictionaries are often by native grammarians in H variety। L is rarely standardized grammar of L variety are usually written by foreigners। यानी ये वो है जो नॉर्मल, जो स्टैंडर्डाइज लोग नहीं लिखते, बट फार्मर्स लिखते, जो जिसको समझ आ गए जैसे वैसे आ गए बोलना शुरू करते। Here we go, stability बेटा। H variety is mostly stable, there are no changes, but L variety is not stable, there are coming changes because of the use of the language। जैसे जैसे इस्तेमाल होता जाता है तब्दीलियां बेटा उसमें आती जाती हैं। Here we go to the next one about grammar। H variety की ग्रामर स्ट्रॉन्ग है, L variety की ग्रामर
हल्की होती है। इस क्लियर? शुड आई रीड दिस स्लाइड और यू कैन बाय योरसेल्फ? आप कर सकते हैं बेटा, ये मैं करूँ इसको? कर सकते हैं? थैंक यू सो मच। लेक्सिकॉन, लेक्सिकॉन बेटा इसके वर्ड्स जो है, एल वैरायटी के अंदर जो वर्ड्स है वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं, सॉरी एच वैरायटी के अंदर, और एल वैरायटी के अंदर जो लोअर है उसमें वर्ड्स वही होते हैं जो ज़्यादा किसी को समझ आता है वो बोल देता है, प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड। फॉर एग्जांपल लेक्सिकॉन इज ऑफन समवट शेयर्ड बट जनरली देयर इज अ डिफरेंशिएशन। कुछ वर्ड्स जो है वो शेयर होते हैं और कुछ वर्ड्स में फ़र्क होता है। एच हैज़ वोकैबुलरी दैट लैक्स दैट एल लैक्स, एच के अंदर वो वोकैबुलरी होती है जो एल के अंदर नहीं होती, एंड वाइस वर्सा। और बिल्कुल इसी तरह जो लोअर लैंग्वेज वैरायटी है उसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हायर के अंदर नहीं होते बेटा। इसके लिए दे आर पेयर्ड लेक्सिकल आइटम्स, कुछ ऐसी हैं जो आपस में मिलती है, यानी लेक्सिकल जो हायर वैरायटी है उसमें एक वर्ड है और इसी के करस्पॉन्डिंग लोअर वैरायटी के अंदर दूसरा वर्ड है। एल एंड एच हैव डिफरेंट टर्म्स फॉर द सेम ऑब्जेक्ट। इस क्लियर? एक ही चीज़ के लिए मुख्तलिफ जो है वो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो एच वैरायटी इंग्लिश उसमें हम कहते हैं मनी, पैसों को, मनी और एफ्लुएंस, मालो दौलत और रिचेस वगैरह वगैरह। बट लोअर वैरायटी में हम उसको ब्रक, बक भी क्या देते, बी यू सी के बक, और वी आल्सो कॉल इट ग्रीन, ग्रीन्स मतलब सब्ज कलर के जो नोट्स होते, लाइक इन उर्दू वी कॉल इट, यानी हम कहते हैं 1000 रुपये का नोट या 500 रुपये का। और एल वैरायटी में हम उसको बाद बाबा कायदे आज़म भी कहते हैं। क्लियर? तो ये जो वर्ड्स है ये हमारे पास एल वैरायटी और एच वैरायटी। If we go to the next one, we have phonology बेटा। दोनों की जो वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन है वो सेम नहीं होती, कुछ वर्ड सेम होते, कुछ वर्ड मुख्तलिफ होते हैं। इस क्लियर टू एवरीबॉडी? अब कौन से वर्ड सेम होते हैं, कौन से मुख्तलिफ होते हैं, इसकी एक अलग स्टडी है। लेकिन नॉर्मली ये है कि जो नाम होते हैं और जो वर्ब्स होते हैं वो सेम रहते हैं। जो छोटे वर्ड्स होते हैं हमारे पास, जब प्रपोजिशंस हैं, प्रोनाउंस हैं, और इसके अलावा हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह वो चेंज हो जाते हैं। इस क्लियर? फॉर एग्जाम्पल डू यू वांट टू इज एक्चुअली द हाई वैरायटी ऑफ इंग्लिश। Do you want to do you want to drink water? ये high variety है। Wanna drink water? ये low variety है। Do you want to change it to wanna? Probably change it to probably. It's clear? If we go to the next one, about the distribution of Diglossia and language family, space and time. देखिए इनकी distribution बेटा, और ये distribution कर रही होती है, हर family के अंदर ये चीज़ होती है, और एक लंबे अरसे से चल रही होती है, आज की चीज़ नहीं है, और आज से 200 साल पहले भी थी और आज भी है। बट देर आर बिग डिफरेंस, स्मॉल डिफरेंसेस एक्चुअली। 200 साल पहले जो एल वैरायटी थी उर्दू की या फॉर एग्जांपल अंग्रेजी की वो और थी, और जो एच वैरायटी थी वो और थी। वैरायटीज आज भी एग्जिस्ट कर रही, उनके अंदर थोड़ी थोड़ी चेंजिंग जो है वो आई है, बट ओवरऑल जो एग्जिस्टेंस है वो दोनों की मौजूद है। If we go to the next one, what engenders Diglossia and under what conditions बेटा? डिग्लोशियाज कब पैदा होती हैं ज़बान की वैरायटीज, और किस सूरत हाल के तहत पैदा होती है? एग्जिस्टेंस ऑफ एन एंशिएंट और प्रेस्टिजियस लिटरेचर composed in the H variety which the linguistic culture wishes to preserve as such। देखिए H variety बेटा वो कदीम ज़बान से चलती आ रही है, तो वो शुरू से मौजूद है किसी ज़बान की। जब ज़बान कोई मारूज़ वजूद में आती है तो जो कदीम ज़बान से हमारे पास आ रही है वैरायटी किसी ज़बान की मौजूद है, दैट इज़ एक्चुअली H variety। And we go to the literacy is usually a condition but is usually restricted to a small elite. When conditions require universal literacy in H, pedagogical problems ensue। जैसे ही हम कदीम ज़बाने में लिखी हुई या पुराने ज़माने के लिटरेचर को बेटा हर एक के लिए अवेलेबल करेंगे कि सबको उसकी समझ आ जाए, तो फिर निसाबी जो प्रॉब्लम्स है, मसाइल वो आएंगे। लिहाजा फिर हमें जो लोअर वैरायटी है लैंग्वेज की वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी उसको समझाने के लिए। एंड विद दिस लेट अस फिनिश अवर टुडेज लेक्चर, एंड इसको बेटा आज इधर ही ख़त्म करते हैं। वी हैव एग्जांपल ऑफ डिग्लोशिया बट वी विल स्टडी दैट ऑन आवर टुमारोज लेक्चर।